Okay. What is metal? Can anybody in the class can tell me what is metal and what are metals and what are non-metals? Is there anyone? Please turn on your camera, everyone. Please fast. Afrin, Ritvika, Umar. Please turn on your camera. So what I'm saying here is that we are talking about the elements. So elements generally we have divided into three broad categories, all known elements. What are elements? You know everyone that these are the substance that consist of only one kind of atom. An element cannot be simplified. Broken into simpler new substance even by chemical method. Okay, केमिकल मेथड के थ्रू भी आप किसी भी एक एलिमेंट को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. यू अंडरस्टूड? So substance, these are substances that consist of only one kinds of atoms, and an element cannot be broken. And different elements have different kinds of atoms. Same elements have same kinds of atoms that we have studied earlier also. But these elements are divided into three main categories. One is metal, another one is metalloids, and the third one is non-metal. Third one is metalloids and is metalloids and non-metals. समझ आया? Got it? Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग को ये these have been divided into three broad categories and we have to write this them all. Okay. And what actually are metals? What actually are metals? So metals are those substances that consist of either 1, 2 or 3 electron in their outermost shell. They consist of either 1, 2, अभी लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ पहले समझ लो. 1 or 2 or 3 electron in their outermost shell, they are called metals. Metals generally lose electrons and they form electropositive ions. Metals generally lose electrons and they form electropositive ions. You understood? समझ आया? Metals generally lose electrons and they form electropositive ions. Metals are good conductor of electricity. These are the physical properties that metals are good conductor of electricity. Okay. So if I'm telling here that metals are the substance that consist of 1 or 2 or 3 electron in their outermost shells. So please start writing this one, everyone, that there are 117 elements and they have 1, 2 and 3 electron in their outermost shells. Except the hydrogen and helium. Hydrogen and helium don't have, means they too have 1 and 2 electrons respectively. Note it down fast. Yes, everyone done? हो गया? No.
जल्दी से लिखो फटाफट से स्पीड में. मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट दैट शोज बोथ, बट मेटलॉइड्स में सिर्फ इतना ही है. ओके, ये हीलियम एंड हाइड्रोजन बोथ हैव वन, और हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, but they are not considered to be as metals. Okay, they are still having one and two, but they are not metals. Non-metals have generally 4 to 7 electron in their outermost shells, and generally they have 4 to 7, not 8. I'm repeating, 4 to 7, not 8. Okay. Done. Noted. Yes. Okay, if I'm talking about the properties of, let's have a question over it. Okay, can you answer me this question? Write down this question. The electronic configuration of three elements x, y, z are this. Which of the following is correct? Sir, option C. Option C. C. No, C is not correct. Sir, D. It's D. Why it's D? याद नहीं है समझना चाहिए. Why it's D? Because Why is Z it has metal? less. Because it is having two 7 electrons in its outermost shell, 7 electrons in, Because Z has two in its outermost shell, it's metal, and Y has and it is 7 in having, its outermost shell, it's not metal. and Z is metal just because it is having 8 electrons. Sorry, 2 electrons in its outermost. 8 पे कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि 8 तो नॉर्मल गैसेस होती है. हीलियम को छोड़ करके, हीलियम एक ऑल्सो नॉर्मल गैस है. हीलियम इज ऑल्सो अ नॉर्मल गैस, but it has 2 electrons in its outermost. Helium atomic number is 2, so it has 2 electrons. Got it? समझ आया? समझ आया? चलिए. Now we shall be moving towards the properties of metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals. Physical properties, you know that physical properties means generally good conduct of electricity, density, melting point. ये सब physical properties हैं. Chemical properties में क्या होता है कि acid से react करेगा metal तो क्या होगा, metal when react with base तो क्या होगा. तो this type of things are called chemical properties. Okay, जिसमें reactions होती है. इसमें कोई reaction नहीं, melting point, densities में कोई reaction नहीं, तो these are considered to be as physical properties. So metals generally have high densities. You all know that metals have high density. Iridium has the highest one. अगर मैं इरिडियम को आपको 1 kg इरिडियम का अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 1 kg इरिडियम 22 पॉइंट, मतलब इरिडियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी थी.
iridium has the highest density, 1 kg iridium, 1 kg iridium. देखो 1 kg जो मास है ना, 1 किलोग्राम इज द मास जो कि इरिडियम के उसमें रखा हुआ है। ओके, अब हम लोगों ने आर्बिट्री चूज किया था, सब चीज सब सब लोगों ने, कोई ऐसा बोल रहा था कोई किसी का 1 kg इतना हो सकता है। तो वी हैव डिसाइडेड दिस वन दैट इंटरनेशनली वी हैव एक्सेप्टेड दैट, हमने एक बनाया मास कितना 12, और उसकी डेफिनेशन है पर्टिकुलर कि वो मास कितना होगा, उसको 1 kg लिया, और 1 kg मास जो होगा वो एक्चुअल में असली मास 1 kg का वो रखा हुआ है कहाँ पर? ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप 1 किलो जो कि है 1 kg का, जिसको हम लोग यूआर किलोग्राम भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली बाय जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, वो कहाँ पर रखा हुआ है? मेनली फिजिक्स के की लैब के अंदर, ये फिजिक्स में जो, और शायद से यूके लंदन में रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट्स नोन बाय इट्स फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, और ये 1 kg का जो मास है ना, वो तुम अगर देखोगे तो ये कितना छोटा है, जैसे चेस का वो होता है ना, मतलब इतना छोटा सा मास 1 kg का, ये तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी, मतलब बहुत छोटा सा 1 kg मास। मैं आपको दिखाऊं तो 1 kg मास जो एक्चुअल में जिससे सारी कंट्रीज कंपेयर करती हैं, ठीक है, वो रखा हुआ है एक कंट्री के अंदर, वन 1 kg मास, और वो बहुत छोटा है। मतलब आप तो आयरन को देखते होंगे, तो आयरन में तो वो आपको बहुत ज्यादा मतलब बड़ा दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल में 1 kg मास जो है वो लैब के अंदर रखा हुआ है। और क्योंकि मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूँ कि इरिडियम का जो मास है ना, जिससे आप सब सब लोग कंपेयर करते हो, ठीक है, वो इरिडियम का बना हुआ है, इट इज एक्चुअली इरिडियम का बना हुआ है, और वो इरिडियम का मास जो है वो एक लैब के अंदर रखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन अ लैब। और वो बहुत छोटा मास है, तो मिलेगा कि वो शायद 200 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, ऐसे है। लेकिन वो 1 kg का है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप इरिडियम के मास को, लेट सपोज इफ यू टेक वन, ऐसे आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप लेते हो, तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये 1 सेंटीमीटर डायमेंशन हो, 1 सेंटीमीटर ये हो, और 1 सेंटीमीटर ये हो, तो ये इसका वेट 22 ग्राम होगा। जबकि यही चीज अगर आप लिथियम के लोगे, लिथियम का, तो उसका होगा 0.5 ग्राम, 1 ग्राम भी नहीं पूरा, 0.5 ग्राम। तो लिथियम का जो मास होता है वो बहुत छोटा, सबसे लोएस्ट डेंसिटी। वाटर का अगर यही तुम एक बर्फ का टुकड़ा बना दोगे वाटर का, तो बर्फ का उसका 1 ग्राम मास होगा, कितना होगा? 1 ग्राम। तो वाटर से 22 गुना में बड़ा है। यानी आपने अगर जितना 1 लीटर की पानी की बोतल के अंदर आप 1 लीटर पानी भरते हो, उसका वेट 1 kg होता है, अगर वही चीज अगर आप इरिडियम की लोगे तो वो आपको 22.4 kg की बनेगी, यानी 22 किलो 400 ग्राम की बनेगी। तो इरिडियम बहुत भारी होता है। समझ आया? यस और नो? तो इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा ज्यादा होती है, हैज द हाईएस्ट डेंसिटी 22.4, 22.5 लिखा हुआ है यहाँ पे, सही। हाईएस्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट दे कैन बी इजीली कट। There are some metals like gallium and cesium, they have low melting points and they can melt। ये भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये भी मेल्ट कर सकता है। मेल्टिंग ऑफ गैलियम, मेल्टिंग, ठीक है। इवन कि आप अगर उसको देखोगे, इफ यू पुट द गैलियम, उसका जो रूम टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, नहीं है, इट इज नियरली दी, हम बोलेंगे कि वो गैलियम जो होता है वो हाथ की जो हीट होती है ना, उसकी हीट से पिघल जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा। तो गैलियम जो मेटल होता है वो इतना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा सा वार्म यानी हल्के से पानी के अंदर रखोगे तो ये हाथ पर ये पिघल जाएगा, एकदम मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, और ये
ऐसे। नाउ इट इज, यू कैन कैप इट ऑन द पाम। तो ये एक मेटल है जो का जिसका रूम टेम्परेचर मतलब हल्के से गर्म पानी से उसकी हीट से पिघल गया। दिस इज द गैलियम मेटल। ओके, दिस इज द गैलियम मेटल एंड इट हैज, एंड सीजियम ऑल्सो, सीजियम भी ऐसे ही है कि इसको अगर तुम अपने हाथ पे रखोगे तो ये क्या कर जाएगा बोलो, ये मेल्ट कर जाएगा। आई बात समझ, आई बात समझ। और अगर मैं देखूं कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं सोडियम को, सोडियम पोटेशियम को देखूं तो दे आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। कटिंग ऑफ सोडियम, कटिंग ऑफ सोडियम विद नाइफ। ठीक है, तो इफ यू टेक अ पीस ऑफ सोडियम, सोडियम को पानी में रखते तो ये क्वेश्चन आएगा कि सोडियम को पानी में रखते तो एकदम से वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन सोडियम मेटल एक ऐसा मेटल होता है कि जिसको आप, जिसको हम लोग हमेशा कैरोसिन के अंदर डुबा करके रखते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में ना आ जाए। अगर ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है ये रिएक्ट कर जाता है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि यू कैन इवन bend it with the help of your and it can be easily cut with the help of knife. So you can see that sodium and potassium are so soft metal that they can be even cut with the help of knife. इसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो these are the soft metals। समझ आया सबको, समझ आया। Yes, sir. उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, टंगस्टन जो मेटल होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो टंगस्टन मेटल्स इज जनरली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स, बल्ब के फिलामेंट्स। ओके, टंगस्टन। कुछ सही कर लिया। टंगस्टन मेटल जो होता है वो, इट इज यूज्ड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डब्ल्यूज की वो होती है। तो उतना, अरे यार बल्ब लिख रहा हूँ, क्या लिखा जाता है, बल्ब। तो हीटिंग अप्लायंस के जो टंगस्टन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो इतने गर्म होते हैं कि रेड हॉट। अब ये क्योंकि ऑक्सीडाइज कर जाता है तो इसलिए तो ये वो हो जाता है, मतलब सिंपली ये क्या कर जाएगा, रिएक्ट करके जल जाता है। तो जलना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मेल्ट होना इज डिफरेंट थिंग। दोनों में फर्क है, जलने में और मेल्ट होने में फर्क है। ठीक है, जलता जब है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेल्ट जब होता है तो अपनी स्टेट को चेंज करता है। अगर तुमने पानी को जलाया, पानी को जलाते नहीं हो, पानी को अगर आइस की फॉर्म में, तो वो क्या करता है, मेल्ट करता है। क्या करता है वो, मेल्ट करता है। समझ, मेल्ट करता है, तो वो जलता नहीं है। जलना इज डिफरेंट थिंग, मेल्ट होना इज डिफरेंट थिंग। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा दें, बल्ब के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, उसके अंदर कोई नॉबल गैस आर्गन वगैरह से भर देते हैं, ऑक्सीजन को हटा देंगे। और तो फिर जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन की मदद से कोई चीज जलती है, तो वो जलेगा, जलेगा नहीं। और क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये इसलिए ब्रेक भी नहीं करता। इट डू नॉट ब्रेक, इसका फिलामेंट जो है वो ब्रेक नहीं करता है। तो टंगस्टन हैज द हाईएस्ट, हम बोलेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसकी वजह से अगर हम लोग उसको ऑक्सीजन हटा दें बल्ब में से, तो फिर बल्ब में से ऑक्सीजन हटाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो जलेगा तो नहीं, लेकिन मेल्ट नहीं। जैसे वुड को अगर मैं बोलूँ कि वुड आप मेल्ट नहीं करते हो, वुड को आप जलाते हो, लकड़ी को आप जलाते हो, मेल्ट थोड़ी करते हो, पिघलाते थोड़ी ना उसको। तो पिघले वुड पिघल नहीं सकती क्योंकि वो, समझ आया, उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, तो वो जल जाएगी लेकिन मेल्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह से मेटल जो है, उसमें से अगर आप हवा को हटा दोगे तो वो जलेगा नहीं। अगर उसको हाई टेम्परेचर रखोगे तो मेल्ट, हम मेल्ट क्यों नहीं करता है, पिघलता क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट। आई बात समझ, यस और नो। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टंगस्टन है, इरिडियम की बहुत ज्यादा हाई डेंसिटीज होती है, लिथियम की लो डेंसिटी होती है। लिथियम मेटल्स में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, गैलियम में सीजियम में कम होता है, जनरली सॉलिड्स। ठीक है, इस तरह से लिखना शुरू करो फटाफट से। पेप्टाइल्स, जल्दी लिखो फटाफट, टाइम नहीं है, फटाफट से लिखो। लस्टर होते हैं, शाइनी, मतलब शाइनी होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर।
When you're done, please let me know. हो गया? Done, everyone? अब बता तो दो. No, sir. Silver is the most shiny metal. Silver is most shiny. And gold is most malleable. Malleable and ductile. Gold is most malleable and ductile. Gold is most malleable and ductile. लिख देना इसको.
Sir, done. उसके बाद सबने लिख लिया? नोटेड एवरीवन? Yes. The physical properties of non-metals. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी वैसे ही होंगी जो मेटल्स की, उसकी अपोजिट फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी ऑफ नॉन मेटल्स। लाइक मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। Metals are malleable and ductile. Non-metals are non-malleable, means you cannot draw them into thin sheet and you cannot draw them into wire. लकड़ी को कभी देखा है कि उसको आप पतली खींच के पतली लकड़ी बनाना, नहीं हो सकती, वो टूट जाएगी। They can be easily broken. They are brittle. They can be broken. They are non-shiny except the iodine, which is non-metal, which is an exception of iodine. And allotrope of carbon, diamond. Diamond is a type of carbon. A diamond, a form of carbon ही है diamond. So we can say that it is also okay. And bromine is the only metal that is liquid at room temperature. Like all the metals, non-metals are either liquid or gas. Like N2 is a gas, O2 is a gas, H2 is a gas. Okay, so these are generally non-metals which are gaseous state. And solid में carbon, sulfur, phosphorus, they are solid. Okay, but only non-metal that is liquid at room temperature is bromine. Bromine is the only non-metal that is liquid at room temperature. Okay, so they are generally solids or gas, but they are bad conductor of electricity. They are easily breakable. They can be, but diamond is the hardest naturally occurring substance. Similarly, they are bad conductor of electricity except graphite. Graphite is also an allotrope of carbon. What is allotrope? We will discuss it, but you have to keep in mind that graphite forms an exception because it is a good conductor of electricity. So you have to write it down fast. When you're done, please let me know.
डन। No. No. यू डन। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी कीप सोडियम इमर्स इन केरोसिन ऑयल, हम लोग को केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स करके रखते हैं। व्हाई इज व्हाइट फास्फोरस कैप इमर्स अंडर वाटर, कैन वी कीप सोडियम इमर्स अंडर वाटर, व्हाई। तो सवाल यही है कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में आता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, देन फाइनली व्हाट हैपेंस इज दैट इट कैचेस, इट ऑक्सीडाइज एंड कैचेस। Okay, so that's why we used to cap it in the to prevent it to react with the atmospheric gases. So it emerges in chemistry to protect it from action of oxygen, moisture, and carbon dioxide of air to prevent the accidental fires. Okay. And similarly, lithium, sodium, potassium बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए लिथियम की जो बैटरी होती है, तो मैं दिखाता हूँ। तो लिथियम एंड सोडियम पोटेशियम, तो आजकल लिथियम आयन की बैटरी चल रही है ना बहुत ज़्यादा, तो दिखा देता हूँ। तो इसलिए अगर वो लिथियम आयन की बैटरी किसी वजह से एक्सीडेंट होकर के वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए, तो फिर अ, फोन के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी होती है, उसमें भी कभी कभी आग लग जाती है। तो लिथियम आयन बैटरी, सो यू कैन चेक दिस वन, इवन दिस इज अ लिथियम आयन सेल। ओके, और अगर तुम इसको पिन करोगे तो इसके अंदर देखो कितनी तकड़ी आग लगी। ये एक लिथियम आयन का सेल है, और इसके अंदर लिथियम आयन है, 3.2 वोल्ट का ही सिर्फ ये सेल है। ओके, और इसके अंदर उसने कील को लगा दिया। अब जैसे ही ये कील को लगाया, तो ये एटमॉस्फेयर से अब ऑक्सीजन जाने लगी है इसमें, अब ये रिएक्शन शुरू हो गई है। जैसे ही वो उसको और ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, तो इसके अंदर से गैस निकलनी शुरू हो गई है, एंड इट विल स्टार्ट कैचिंग फायर। सो इसमें आग लग जाएगी। ठीक है।
आग भी लगती है, इसमें नहीं लगी तो कोई वो नहीं है, लेकिन आग लगती है और खतरनाक आग लगती है एकदम। तो यहाँ पर दिखाया गया है लिथियम आयन बैटरी किसी वजह से भी अगर आ गई तो लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर किसी वजह से ओपनिंग वो हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, देखो एक की बैटरी ने कितना ज़्यादा वो किया है, बस वो रखी हुई है बैटरी, हाफ मिनट, सिर्फ हाफ मिनट लगा लिथियम आयन को एक्सप्लोर करने में, और ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब हवा के आने में ये इतनी ज्यादा, मतलब यू कैन नॉट इवन, इसको आप फायर एक्सटिंग्विशर से भी जल्दी से नहीं बुझा सकते, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप इसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा लें, क्योंकि इसको हल्की सी ऑक्सीजन चाहिए। सेम सोडियम एंड पोटेशियम भी ऐसे ही करते हैं। If you keep the sodium and potassium in the open air, they are so reactive that if you cap them in open air, then finally they are going to react with the atmospheric gases. And if they are going to react with the atmospheric gases, then finally they will catch fire. So this is the answer for your. You have to write it down fast here. कैसे लिखें उसको फटाफट से। आंसर ये है, व्हाइट फॉस्फोरस को भी हम लोग नहीं रखते क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑल्सो रिएक्टिव। उसको भी हम लोग अंडर, उसको पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस पानी से नहीं रिएक्ट, तो उसको कैरोसिन, लेकिन सिंस द कैरोसिन, सॉरी सोडियम रिएक्ट इवन विद वाटर, तो उसको पानी में रखते हैं, लेकिन फॉस्फोरस पानी से नहीं रिएक्ट करता, तो व्हाई शुड बी केप्ट इट इन द कैरोसिन। तो नॉन मेटल है तो फॉस्फोरस उसको पानी में नहीं रिएक्ट करता, तो दैट्स व्हाई वी केप्ट इट इन द वाटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट टू रिएक्शन विद द मॉइस्चर, क्योंकि पेंटॉक्साइड बनाता है फॉस्फोरस, पेंटॉक्साइड लिखा हुआ है इसका आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन है और ये इसका आंसर। सोडियम को पानी के अंदर नहीं रख सकते हैं, इसलिए रख सकते हैं क्योंकि सोडियम को अगर पानी में रखा तो सोडियम पानी से तो रिएक्ट करता है, Na when react with water, it forms sodium hydroxide प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, अ, तो इवन इफ यू, दिस इज अ पीस ऑफ सोडियम ही इज हैविंग इन हिज हैंड, और अभी ये जैसे ही पानी में इसको डालेगा तो ये जहाँ जाएगा ये इतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा कि जहाँ ये जा रहा है ना वहाँ पे, अरे तो मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ कुछ, सॉरी, दिखा रहा हूँ। So if you cap this sodium in water, he is throwing this sodium in water, and you will see that it is reacting so rapidly with water that the हाइड्रोजन गैस जो मैंने उसमें रिएक्शन में लिखी है NaOH प्लस H2O बनेगा, वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के अंदर कि वो हाइड्रोजन गैस इजीली कैच फायर एंड इट विल ब्लास्ट, जनरली इट विल ब्लास्ट। तो ये सब हमारे पास सोडियम के मेटल्स है, और ठीक है, रिएक्शन करने पर ये फास्ट रैपिडली रिएक्ट करता है। गॉट इट, समझ आया सबको? तो इसलिए हम लोग सोडियम को भी पानी में नहीं रख सकते, क्योंकि सोडियम को अगर पानी में रखा तो वो भी कैच, इट विल आल्सो कैच फायर। एक्चुअली सोडियम नहीं करता है, जो हाइड्रोजन गैस, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो बट इन दिस केस अगर मैं कैल्शियम के साथ करूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस इसमें जलती नहीं, इट इज नॉट कैल्शियम। तो देखोगे कैल्शियम रिएक्शन विद वाटर, कैल्शियम फ्लोट करता है, कैल्शियम फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों करता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कि वो ही जो हाइड्रोजन गैस बने वो जल जाए। तो इफ यू सी दैट दिस इज द कैल्शियम मेटल एंड इफ यू पुट इट इन द water, then you can see that if you put this calcium in water, then it will start producing rapidly the hydrogen gas, and this you can check it that calcium is floating on the surface, क्योंकि वो जो बबल्स है वो हाइड्रोजन की सरफेस, कैल्शियम की सरफेस पर स्टिक करते हैं, तो उसको एक अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे रॉकेट के अंदर होता है ना, कोई चीज बहुत स्पीड से निकले तो उसका मास को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जैसे रॉकेट में से। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, और अब थ्रस्ट बबल्स उससे स्टिक कर जाते हैं, जिसको वेट कम कर देते हैं, ट्यूब के ऊपर कोई बैठ जाए तो पानी में डूबेगा नहीं, तो सेम ऐसे ही केस इसके साथ भी होता है। the bubbles get stick with the surface, but this reaction is exothermic, हीट जो प्रोड्यूस होती है उससे
हीट तो गर्म तो होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस जो जल रही है वो इट इट कैचेस फायर, वो जल ही जाए, मतलब आग ही पकड़ ले, ऐसा नहीं। इट डज नॉट कैचेस फायर, ओके, इन दिस केस। समझ आया? तो कैल्शियम फ्लोट करता है, वो पढ़ेंगे अगले उसमें, तो फिलहाल तो लिख लो इसको जल्दी से। यू डन? No, sir. डन? Yes, done, sir. समझ आया? Yes, sir.
अब बताइए, which of the following property generally not shown by metals? Which of the property is generally not shown by metals? It is dullness. Dullness कहाँ शो करता है? Ductility शो करता है, मतलब it can be drawn into thin wire. Sonorous मतलब it produce sound on striking with some hard surface. And electrical conduction you know already. Next is ability of metal to be drawn into thin wire is known as ductility. Okay. आगे why aluminium is used? Question number 3 को कॉपी में लिखो फटाफट. Done. Yes, sir. So क्या आंसर होगा इसका? बोलो. Good electrical conductivity and thermal conductivity and high melting. समझ आया? So 1 and 4th D is the correct option. Okay. इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम मेटल्स को यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में. गॉट इट? समझ आया? सो राइट इट डाउन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डन एवरीवन.
You done? Yes, sir. So that's all for today. We'll meet in the next one. Thanks for coming. Okay. Beautiful. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Upside Charlie. Fine. Okay, just a minute. Just a minute. I'm just checking the second. So, hello, good, Doris, Chakrigan, Hamsa, how are you? Hamsa, I was just checking your sheet, and you were not doing good in the test. And that was very easy questions in the test paper, but you did means almost why you committed so much mistakes? It's because I have. Huh? Why you committed so much mistakes? Yes, sir. I'm asking that uh, you committed so many mistakes. Why? In the test papers. मुझे मैं just coming back in a minute. मुझे अभी तुम्हारा टेस्ट पेपर नहीं लेना तो चेक करके आना पड़ेगा को. Okay. Good evening, sir.
ओके इट इज नॉट ओपनिंग इन माय उसमें, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे। सॉरी वी वर डिस्कसिंग दी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था ना बेटा? Yes, sir. Yes. So we shall be moving further. Just a minute. Yes. Nine and speed. तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ना वो होगा दैट वुड बी दी डाल्टन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत डिफरेंस है यार, सर्च करना है कार्बन इंजन